Good morning, everyone. I hope you all are doing well. Today, we are learning parts of speech. Specifically, I'm targeting verb, advanced level for IELTS, academic, and IELTS general training. Today's learning objectives are identify different types of verbs, understand how verbs function in sentences, use verbs accurately in IELTS writing and speaking, avoid common grammatical errors, use a variety of verb forms for a higher band score. Definition of verb. A verb is a word that tells us what the subject does, what happens to the subject, or what state the subject is in. A verb expresses an action, a state, an event, position, existence. वर्ब 5 तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करता है, एक्शन की तरह, स्टेट की तरह, इवेंट की तरह, पोजीशन और एग्जिस्टेंस की तरह. Examples for your understanding. She writes every day. Action verb. They live in Canada. State. The accident occurred yesterday. Event. He owns 3 houses. Position. There is a solution. Existence. So she writes every day. Writes क्या है? Action verb है. जब किसी भी सेंटेंस में एक्शन आता है, एक्शन हो रहा हो, तो आप समझ लीजिए ये एक्शन वर्ब है. और जब किसी भी सेंटेंस में एक्शन ना हो रहा हो तो समझ लें वो स्टेट वर्ब है. They live in Canada. There is no action verb. Okay, so it is called state. The accident occurred yesterday. Event हो गया. He owns 3 houses. Position हो गया. There is a solution. Existence हो गया. I hope you understand. What is a verb? A verb is the heart of a sentence. It tells us what someone does, action, what someone is, state, what happens, event, what someone has, position. इसके एग्जाम्पल देखते हैं. सब्जेक्ट. शी राइट्स एवरी डे. वर्ब हमारे पास है राइट्स, मीनिंग एक्शन. ही ओन्स अ कंपनी. वर्ब ओन्स, मीनिंग पोजीशन. दे सीम हैप्पी. वर्ब सीम, मीनिंग स्टेट. एन एक्सीडेंट occurred yesterday. Occurred event. Why are verbs important in IELTS? IELTS में verbs क्यों important है? Strong verbs help candidates write more academically, speak more naturally, avoid repetition, achieve band 7 to 9. Compare these. Poor. Many people say pollution is bad. Poor does not mean that the sentence is an incorrect situation. Okay? So poor means sentence is correct, but poor. Better. Many researchers argue that pollution poses a serious threat. Number 1. Replace weak verbs with academic verbs. Students often overuse get, do, make, have, go, say. Teach them stronger alternatives. Weak verb, better verb. Example.
Weak verb, say. Better verb, argue. Example, experts argue that. Weak verb, say. Better verb, claim. Example, scientists claim that. Show, demonstrate, show, illustrate, get, obtain, get, acquire, make, establish, make, create, help, facilitate, increase, boost. And see the examples. I hope you understand. सो जो वीक वर्ब्स हैं जो हम डेली रूटीन में यूज करते हैं, जब हम आइल्स की तरफ आते हैं तो हम बेटर ऑप्शन की तरफ जाते हैं, बेटर वर्ब की तरफ जाते हैं। तो हम इन आइल्स राइटिंग में हम ये नहीं लिखते कि से, हम इससे बेटर लिखेंगे ना। तो आर्ग्यू है, क्लेम है, डेमोन्स्ट्रेट है, ये वर्ड्स हम लिखेंगे फॉर गेनिंग अ हायर स्कोर। आइल्स academic एग्जाम्पल, बेसिक, द ग्राफ शोज अ राइज। ओके। अब बेसिक, जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो वो बेसिक ऐसे ही लिखते हैं, भाई ग्राफ क्या शो कर रहा है, द ग्राफ शोज अ राइज, सारा लिखते हैं ना। इसी वजह से बैंड स्कोर हमारे सही नहीं आते। अब बैंड स्कोर अच्छे लाने के लिए 7 to 8 और 9 की तरफ जाएंगे तो हमें फिर एडवांस जो है वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे। एडवांस, द ग्राफ illustrates a significant rise in unemployment. Basic, scientists say that, तो भाई साइंटिस्ट से दैट बेसिक इंग्लिश है ना, तो उसमें हमारे बैंड स्कोर आएंगे ही नहीं। अब एडवांस की तरफ जाते हैं, देखें एडवांस, या तो हम लिखें साइंटिस्ट आर्ग्यू दैट, साइंटिस्ट सजेस्ट दैट, साइंटिस्ट क्लेम दैट, साइंटिस्ट मेंटेन दैट। आई होप यू अंडरस्टैंड। सेकंड, use reporting verbs. Very important. These are common in task 2 essays. Instead of saying experts say, use experts argue, experts claim that, experts suggest that, experts indicate that, and so on. Reveal, acknowledge, emphasize, highlight, mention, purpose, recommend. I hope you understand. Examples, experts argue that government should invest more in education. Research indicates that air pollution has increased. Many scholars acknowledge the importance of renewable energy. Number three, use precise verbs. Instead of one simple verb, choose a more specific one. Simple, go up. Advanced, rise. Simple, go down. Advanced, decline. Simple, happen. Advanced, occur. Simple, grow. Advanced, expand. Simple, cut. Advanced, reduce. Simple, stop. Advanced, prevent. Keep, maintain. Give, provide. Use, utilize. Formal, but don't overuse. Solve, address. Example, basic, the government should stop pollution. Basic English. Advanced English, the government should address environmental pollution. Number four, use verb collocations. Collocations mean अल्फाज की ऐसी तरतीब जो ग्रामेटिकली करेक्ट आती हो। नेटिव स्पीकर्स डू नॉट कंबाइन वर्ब्स randomly. Good collocation, conduct research, pose a threat, play a role, take responsibility, reach a conclusion, meet expectations, raise awareness, draw attention, provide opportunities, gain experience. Examples, technology plays a significant role in education. Pollution poses a serious threat to public health. Universities conduct research regularly. Government should take responsibility for environmental protection. Number five, word patterns. Students lose marks here. Word plus infinitive.
decide to, plan to, agree to, hope to, manage to, promise to, offer to. Examples: she decided to study abroad. They managed to finish on time. Verb plus gerund: enjoy, avoid, suggest, consider, finish, recommend. Keep examples: he enjoys reading. Verb plus gerund: enjoys plus gerund, reading. The teacher suggested studying every day. They avoided making mistakes. Verbs that can use both: begin, start, continue, like, love, had. Prefer examples: she started working. She started to work. Active versus passive voice. Academic writing uses passive voice frequently. Active: researchers collected data. Passive: data were collected from 500 participants. More examples: the government introduced a new law. A new law was introduced. The company developed the software. The software was developed. Task 1 and reports often favor the passive because the focus is on the process or result, not the doer. Okay. Number 7. Strong verbs for IELTS writing task 1. Avoid repeating shows. Replace the shows. Use illustrates, demonstrates, indicates, reveals, compares, presents, depicts, summarizes, represents, outlines. Example: the chart illustrates that the percentage of unemployed graduates. The table compares the pollution growth of 5 countries. The diagram depicts the recycling process. Number 8. Verbs for task 2. Instead of repeating is, use stronger verbs. Examples: technology enhances communication. Educations, education promotes equality. Pollution threatens biodiversity. Exercise improves mental health. Governments allocate funds. Companies invest in innovation. Universities encourage research. Parents influence children's behavior. Number 9. Advanced modal verbs. Instead of always writing should, vary your language. Modal or meaning. Modal verb should meaning advice. Modal verb must meaning obligation. May possibility. Might weak possibility. Can ability. Ability means skills. If you have any skills, you can do it. Could, possibility, would, hypothetical. Examples: government must reduce pollution. Technology may improve education. Parents should supervise children. Countries could invest more in healthcare. 10. Formal verbs for IELTS essays. Instead of talk about, use discuss, address, consider, examine, explore, investigate, evaluate, assess, analyze. Example: this essay examines the advantages and disadvantages of online education. 11. Strong verbs for IELTS speaking. Students often repeat I think, I think, I think. Teach alternatives.
I believe, I believe that, I suppose that, I assume, I would argue, I tend to think that, from my perspective that, I would say that. Example, instead of I think technology is good, use I believe that technology has transformed modern education. 12. High band verb vocabulary. Common band 7 to 9. We should not use common verb help, make, increase, decrease, decrease, stop, fix, solve, use, change, improve, cause, affect, happen, keep. Okay. So we can use facilitate, establish, generate, create, boost, accelerate, reduce, diminish, prevent, discourage, resolve, address, employ, utilize, use naturally and sparingly, transform, enhance, trigger, influence, occur. Okay. IELTS band 9, band 8 to 9 example paragraph. Weak version band 5 to 6. जब हम इस तरीके से लिखेंगे तो हमारे बैंड 5 to 6 ही आएंगे. Many people say technology is good. It helps students. They get information quickly. Teachers also make lessons easier. जब हम इस तरीके से लिखेंगे तो हमारे बैंड स्कोर 5 to 6, 5.5 और 6 बैंड स्कोर आएंगे. इम्प्रूव वर्जन बैंड 8 to 9. और जब हम इस तरीके से लिखेंगे, many experts argue that technology enhances learning by providing students with instant access to information. Moreover, digital platforms facilitate communication between teachers and learners, while interactive applications promote greater engagement in the classroom. ये तो हो गया एक. नेक्स्ट पे चलते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं. अगर कोई टॉपिक हमारे पास टास्क 2 में एजुकेशन से रिलेटेड आ जाता है, उसको समझने के बाद, अंडरस्टैंड करने के बाद फिर हम लिखेंगे. बट अगर आप ऐसे लिखते हैं, वीक वर्जन बैंड 5 to 6, मैनी स्टूडेंट्स यूज ऑनलाइन क्लासेस, इट इज़ हेल्पफुल, दे लर्न न्यू थिंग्स. सो डेफिनेटली आपके बैंड स्कोर जो है वो 5 to 6 ही आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे. अगर आप थोड़ा अच्छा लिखते हैं, इम्प्रूव वर्जन बैंड 8 to 9 की तरफ जाने के लिए, सो ऑनलाइन क्लासेस इनेबल students to access high quality education from anywhere, while also facilitating flexible learning schedules. In addition, they enhance students' understanding by providing interactive and multimedia based resources. Then you will get band 8 to 9. Number 2, environment. अगर टॉपिक हमारा इन्वायरमेंट से रिलेटेड आ जाता है तो उसको पढ़ने और अंडरस्टैंड करने के बाद फिर हम लिखेंगे. वीक वर्जन है बैंड 5 to 6. अगर आप इस तरीके से लिखेंगे, फैक्ट्रीज कॉज पोल्यूशन, इट इज़ बैड फॉर नेचर, वी शुड स्टॉप इट. अगर इस तरीके से लिखेंगे तो हमारे बैंड्स को 5 to 6 ही आएंगे, इससे ऊपर हम नहीं जा सकते फिर. सो इम्प्रूव वर्जन क्या है, बैंड 8 to 9 की तरफ जाने के लिए. इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू environmental pollution which harms natural ecosystems and public health. Therefore, governments must implement strict regulations to reduce emissions and protect the environment. अगर हम इस तरीके से इम्प्रूव वर्जन लिखेंगे तो हमारे भी डेफिनेटली बैंड 8 to 9 की तरफ हम जा सकते हैं.
अच्छा, नेक्स्ट, नंबर 3, हेल्थ। अगर हमारा टॉपिक हेल्थ से रिलेटेड आ जाता है और उसको अंडरस्टैंड करने के बाद क्वेश्चन को अगर हम लिखते हैं वीक वर्जन, हेल्दी फूड इज इम्पोर्टेंट, इट कीप्स पीपल स्ट्रॉन्ग, जंक फूड इज बैड। अगर इस तरह लिखेंगे तो जाहिर सी बात हमारे बैंड 5 to 6 ही आएंगे, से ज़्यादा नहीं आ सकते। इम्प्रूव वर्जन होगा, बैंड 8 to 9 की तरफ जाना चाहते हैं तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, a balanced diet plays a crucial role in maintaining good health as nutritious food strengthens the immune system and prevents various diseases. In contrast, excessive consumption of junk food increases the risk of obesity and other health issues. Okay? So, number 4, technology. अगर कोई टॉपिक हमारा एडवांसमेंट की तरफ आ जाता है टेक्नोलॉजी के, तो फिर हमें उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहे हैं। देन हम लिखना स्टार्ट करेंगे। अगर हमारे लिखने का जो स्टाइल वो पुअर होगा तो हम फिर इसी तरह लिखेंगे, वीक वर्जन, बैंड 5 to 6, पीपल यूज एप्स एवरी डे, दे आर यूजफुल, दे मेक लाइफ इजी। हम सोच समझ अच्छा लिख रहे हैं, बैंड्स को ऐसे ही आते हैं हमारे। तो इम्प्रूव वर्जन के लिए हमें बैंड 8 to 9 की तरफ जाएंगे तो हमें फिर थोड़ा सा एडवांस की तरफ जाना पड़ेगा। मोबाइल एप्लीकेशंस facilitate daily activities by streamlining tasks such as communication, shopping, and banking. As a result, they improve efficiency and enhance the overall quality of life. Last, number 5, transport. अगर कोई क्वेश्चन हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन के रिलेटेड आ जाता है तो हमें भी ट्रांसपोर्टेशन के सवाल को फुली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये सवाल में एग्जामिनर हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमसे क्या डिमांड कर रहे हैं। फिर हमारी राइटिंग का स्टाइल प्रूव करेगा कि हम बैंड 5 to 6 की तरफ हैं या हम बैंड 8 to 9 की तरफ हैं। ओके, तो वीक वर्जन होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज गुड, इट इज चीप, मैनी पीपल यूज इट। और इम्प्रूव वर्जन सब जाएंगे तो बैंड 8 और 9 जो स्टूडेंट्स लेते हैं तो जाहिर सी बात है उनकी अच्छी होती है। Public transportation provides an affordable and efficient travel option for commuters, while also reducing traffic congestion and environmental pollution. Moreover, it supports sustainable urban development by decreasing reliance on private vehicles. ये हमारा वर्ब आज कंप्लीट हो गया है। और जो है, टुडे वी अंडरस्टैंड वर्ब, parts of speech, advanced level for IELTS, academic and general training. I hope you understand today's class. Okay, thank you so much.